Hello children, let us continue with the tissues. So last time we discussed that plant tissues, they are meristematic and permanent. We discussed meristematic and permanent. Again they are of two types, simple and complex. So we discussed simple permanent tissues, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Now the next is complex permanent tissues. Complex permanent tissues are those which are made up of more than one type of cells. Examples are xylem and phloem. Both are complex permanent tissue. Here you see the figures of xylem and phloem. So complex permanent tissue that is made up of different type of cells means it is called complex X like xylem and phloem. It has parenchyma, collenchyma, sclerenchyma यानी कि दो या दो से ज़्यादा तरह के सेल एक ही टिश्यू में होते हैं. Then it is known as the complex X permanent tissue. So xylem and phloem टुगेदर दोनों को इकट्ठा हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स इन द प्लांट. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इट इज अ xylem. It is complex because it is made up of 4 type of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. First two, tracheids and vessels, ये दो जो हैं they perform the main function of conduction. काम क्या होता है xylem का? To carry water and minerals in the plant. So it help in the transportation of water in the plants. तो ये दो जो cells हैं इसके tracheids and vessel, इनका ही मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन. xylem parenchyma, just like the parenchyma, they are thin walled, they store the food material. क्योंकि ये xylem में होते हैं तो इसका नाम xylem parenchyma. Similarly fibers हमने क्या sclerenchyma, means they are thick walled, provide support. Here also because they are thick walled they provide support. So xylem parenchyma as such कि they help in storage of food material. Xylem fibers, they help in providing mechanical support, and these two tracheids and vessels, they help in the conduct water and minerals in the plant. Then function, cells of the xylem, they are dead except parenchyma. अभी हमने किया थिन वॉल लिविंग सेल्स होते हैं, बाकी सब डेड. तो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फाइबर्स दे प्रोवाइड द सपोर्ट. अब दोनों ही ये वेसल्स हैं और ये ट्रेकीड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कंडक्शन काम है. ट्रेकीड एक्चुअली क्या है? दे आर इंडिविजुअल सेल, एक सेल है जैसे, दैट हैज़ ओपनिंग्स और पोर्स जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होती है, पिट्स हम इसको कहते हैं. लेकिन वेसल्स क्या है? दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड, और उनकी जो एंड वॉल्स है, ये वॉल्स है, दे हैव थिकनिंग्स, perforations, and these are open also, कि पूरी end walls ही नहीं है. So this vessels, you can say, they consist of many cells placed end to end, row of cells. Tracheids, they are the individual cells, काम दोनों का conduction, but vessels क्योंकि वो बड़े pores हैं, they are more efficient in conduction as compared to tracheids. So these vessels, they are present in the एंजियोस्पर्म, हायर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, और ट्रेकीड जो होते हैं लोअर प्लांट जैसे फर्न्स में और जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. देन नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोएम. Phloem is also a complex tissue because it is made up of more than one type of cells.
जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जस्ट लाइक जैसे हमने जाइलम का किया है, फाइबर्स यानी कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम, they are called the phloem fibers. Parenchyma cells present in the phloem, they are called the phloem parenchyma. तो जैसे आम parenchyma का काम है वैसे ही phloem parenchyma, just like the fiber का काम है to provide support, just that is the function of phloem fibers. Then conduction, the function of the phloem is to transport food materials in the plant. The food that is synthesized in the leaf, but it has to be transported to different parts. चाहिए तो वो हर पार्ट को होता है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ से डिफरेंट पार्ट्स में, बर्ड में, फ्लावर में, रूट से, रूट के पास, स्टेम के पास, दिस इज ड्यू टू द फ्लोएम. Sieve tubes. So again, it consists of long tubular structures, many cells. It is made up of many cells. ये बहुत सारे cells हैं placed end to end, और cross walls में perforations are there. There are perforation in the cross wall. Companion cells, associated cells. इसके साथ ही thin walled cells, they are associated nucleus, क्योंकि sieve tubes जो dead हैं, ये nucleus है, तो this is controlling the function of the sieve tubes. Then phloem fibers and parenchyma. Overall functions: sieve tubes, again they are tubular cells with perforated wall. Sieve tubes help in conductions and conducting elements of the phloem, means responsible for transport of food in the plants, and the food is transported, it is a two-way movement. जैसे जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन फ्लोएम का ऐसा नहीं है, इट कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शंस. Then and the basic difference between the xylem and phloem, xylem that is made up of dead cells, phloem that has living cells. Then thickness, thick wall, phloem comparatively thin walls, and then the difference in their functions, that transport of वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्योंकि वाटर एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, एंड फ्लोइंग जो है फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट कैन बी अप एज वेल एज डाउन. And phloem cells, they has the companion cells, but these are not present in the xylem tissue. Thank you, and next time we will discuss animal tissue. So this concludes the plant tissue system. Thank you.